Yeah. So the group discussion topic, please note down the topic. Your topic is the impact of artificial intelligence on employment. The topic is clear to all. The topic is the impact of artificial intelligence on employment. I am just writing in into the chat box. Okay, so basically you have 5 minutes to So create your point. या सो आपके पास 5 मिनट्स हैं. जस्ट प्लीज नोट डाउन योर पॉइंट्स कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप बोल सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में. आफ्टर दैट व्हेन आई विल से कि स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, देन यू विल स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप डिस्कशन विल बी स्मूथ. तो कोई भी मतलब लड़ाई नहीं करना चाहिए वहाँ पे, और औरों को भी पॉइंट्स रखने के आपको मौके देने हैं. आफ्टर दैट आई व्हेन आई विल बी आस्किंग यू अबाउट द कंक्लूड द टॉपिक, then one of you will conclude the topic. Okay, so you can just note down your points. And it's around 5 8 p.m. and after 5:15 we will be starting the group discussion.
पॉइंट्स रेडी हैं आपके? Yes. सबके पॉइंट्स रेडी हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं हम। एवरीवन, विघ्नेश, सत्या। Uh, Good evening, everyone. Yes, sir. Our topic for today's discussion is impact of AI on employment. So, with your permission, can I proceed the discussion? Yes, please. हाँ, so Yeah. start. So, before we start talking about the impact of AI on employment, let us first understand what is AI. AI is artificial intelligence. So, basically, in previous days, usually machines used to do what we say. So now AI, artificial intelligence, they're able to think on themselves and they used to do the work what we wanted to in a manner and most convenient way. So this is what particularly AI does. So talking about the impact of AI on employment, basically, if we talk about the positive side of it, like it has made the job simple for many of the employees, like handling bundles of Excel sheets to travel plans and presentations. Most of the job has been very convenient and also in a most efficient manner. And also many companies like Google and also ChatGPT, they have used this AI to make our lives more easier. So it also created a job creation. So in this way, it has few positive impacts, and also there are few negative impacts as well. Because of AI, many of the people have been laid off because of the lack of skills they have owned. So we need to adjust to this particular AI revolution. So now I leave you guys to discuss few more points and make a fruitful discussion for today. वेट वेट, Uh, लेट्स जस्ट इसमें एक काम करते हैं कि सब पहले इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक के बारे में, so that I can rate you based on that. And after that, body part will be there, and then conclusion part will be there. So body part you will be discussing among yourself, and the conclusion, everyone will conclude the discussion. Okay, so that I can rate out of 10. Okay, so Vignesh is over. Now Satya, you can start the discussion. Good evening, all of you. As Vignesh told, AI has more impact on our lives in job market also by creating more jobs and lying some people also, because AI has more skills than those people, and which can dominate the people at in some skills. Coming to in what sectors it will create the jobs. For example, in healthcare and services, it will increase the precision of doctors by doing more operations in a efficient manner, and at the same time it will decrease the employment for drivers, but it will decrease the accidents also. It was happened by the drivers due to the lack of negligence and those things. But AI can decrease the accidents as well, and it can take the decision making is more efficient by using AI, because it can analyze the more data in a fastest speed and in a efficient manner also. Yes. Okay, so now Toran, please. Okay, sir. Artificial intelligence is the, if we define the artificial intelligence, it is the function performed by machine by taking the data and perform the task like uh, human, and it get automatic optimized by taking our data and give the better results. So it makes our life easier. It increase our efficiency, productivity. uh, Artificial intelligence, we can do the so many things in just few seconds, like firstly, we can create new songs, we can create image, we can write email in just few seconds, and in this way, this makes our life easier, but the and increase the productivity and the efficiency of organization. So every employee should cope with this artificial intelligence to increase his productivity, and it and it eliminates the unnecessary works that requires so many time.
and at the same time it is also dangerous for human, because it may cause to a danger for the privacy, and also like we have seen the recently there is yeah, it takes data and create the some kind of like deep fakes. So this can create an problem for society, and also they can and uh, it can be used for the wrong purpose. So it should be used in the most uh, proper way, sir. Okay. So Rohit. Yes, sir. Artificial intelligence is basically which performs some task which human intelligence can perform. So it analyzes the previous data, and based on those data, it performs the some specific tasks which are more accurate. So AI has some positive points, some and the that positive points are efficiency will be increased. Like if for a task, if five people are use if five people are doing the same task, if AI does, then only the five, there is no need of these five people. This can be done by only some tools. So also in medical science and educations, it is also helpful, and the accuracy is like sorry, the navigation system, and also in armed forces this can be also be used. And also there are some negative points, such as using AI, some morphed videos can be created, and people's especially women can be blackmailed for money extortions. Okay. So Himanshu. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. So basically, over the years, technology has vastly improved. So AI is the new technology. We are all living in an era of this AI, basically. So it has actually penetrated into all the industries if you look carefully. Like for example, logistics handling has improved, transportation has improved, healthcare. If I talk about healthcare industry, the basically monitoring the parameters of a patient has improved. So if we look at uh, the employment side of it, the uh, although it's a bit expensive in the first place to for us to buy and adapt to the sort that AI tells us to, but if you look at the bigger picture, AI has definitely made our lives easier in terms of the functioning that it has helped. So, uh, if I talk about the negative points, it has definitely led to unemployment. Like some drivers have lost their jobs, some um, technicians have lost their jobs in the industries. So basically, it's two sides of the same coin, but we'll have to see its impact in different cases. So Sri Priya, your turn. Good evening, everybody. So today's topic is impact of artificial intelligence on employment. Like artificial intelligence has definitely improved our lives, has made our lives easier. But in earlier times, when there were rickshaws and when motorcycles were introduced, people used to say that all people whose lives are relied on rickshaws will lose their job. But new jobs were created, like motorcycle mechanics. So many jobs were created. Same like that, AI definitely eliminates some job, but it also creates new opportunities like development and the supervision of those AI websites and all those. But AI also has some disadvantages, like Thoran has rightly mentioned about deepfake. AI can be easily misused, so it is very important to consciously use artificial intelligence and improve its features so that we can not misuse this. So Sai, now your turn. Okay, so I think there is some connectivity issue from the Sai side. So now Subhajyoti, your turn.
Good afternoon, everyone. As the today's topic is the impact of AI on the employment. As many things is discussed, I can there are some points regarding the employment and employability. In the terms of employment, there is the AI has some some has pros and cons. In employment, in the bigger picture, if we see to employ a person, it usually before it took much bigger time because we have to list the skills people applied against that job and who will be the better fit to that particular post. But AI has simplified it. We can now upload that resume or something called CV, and they can automatically be sorted so that the recruitment or the hiring process can be in a very short time. That in terms of the employment, and obviously in the employability, we there are some also pros and cons. Employability, it has taken some jobs, as many people, as many of my fellows have said, but it has also increased some of the employability. In today's time, the chat GPT or some the AI that we use, that should be trained using the machine learning. So it has employed, it is now a full-fledged company. It has employed many people so that we can use it in our everyday life. Good. That's Mahesh, now your turn. Yes. Good afternoon, everyone. In topic for discussion is impact of AI on employment. Yes, in my views, there are both pros and cons because it firstly it leads in benefits are there that it leads to increase the productivity of any industry so that it can leads to supply chain supply chain and increase employability at a greater level, but for only skilled people it can increase. But on the other hand, its cons are that if there are any unskilled people, they can't get any more opportunity. Like in industry, there are many technicians which work manually their jobs. So this is the backward point. Thank you. Okay. So now introduction part is over. ठीक है, तो now coming to the body part. Body part में क्या होता है कि आप सब लोग आपस में discussion करेंगे and I am giving you the 10 minutes to discussion, and after that when I will be asking the conclusion part, then each of you will conclude the discussion based on the points that you have raised during the group discussion. Okay, so clear है? Points clear है कि क्या करना होता है? Introduction part is over now. Now coming to the body parts, जो भी आपके points हैं उनको आपको रेज करना है. ईच वन ऑफ यू विल रेज योर पॉइंट्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी लड़ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. एंड आफ्टर दैट द कंक्लूजन पार्ट विल बी देयर. सो आफ्टर 10 मिनट्स आई विल बी आस्किंग द कंक्लूजन पार्ट, एंड कंक्लूजन पार्ट विल बी शॉर्ट एंड फाइन. Basically, it concluded 2 or 3 points, more than 2 or 3 points, but not more than the 30 seconds each. Okay, so discuss among yourselves. Okay, so discuss कर दो. इसमें नाम नहीं बोलते हैं, इसमें आपको खुद ही डिस्कशन करना है. ओके, कोई भी मतलब डिस्कशन कर सकता है, स्टार्ट कोई भी कर सकता है, फिर उससे कोई भी स्नैच कर सकता है, कोई दूसरा भी स्नैच कर सकता है. As many of my friends had said that the AI has added some cons, that AI has created the deepfake and all mod videos, but I think that is not in the terms of employment. That is not in the terms of the employment or employability. We should take that as a other side of the AI, and we should discuss that. We should discuss as the terms of the topic.
Okay. I completely agree to what Subhajyoti has just said. So, as far as AI goes, basically it has brought out this old adage of survival of the fittest. So, if I look at it, if I want to say this from a technician's point of view in an industry, so basically his skills are very limited and repetitive. But with the incoming of AI, he or she has been forced to upskill. So this upskilling basically has been brought in by AI, is what I feel. And apart from that, uh, definitely the people who learn how to use AI have survived this storm of AI which has been brought in the employment sector basically. Yeah, Uh, I'm totally agree with both of my friends. As they have told about, as times change, we have also to be changed, because in the current era we have to have a lot of productivity, as well as have to growth our GDP, so that we can compete in our competitive markets with other countries. So we have to parallelly go towards new technologies, and also trained our technicians as well as unskilled laborers, so that we can compete with other countries as well. Thank you. Basically, we are fearing because of in short term there will be huge impact. There will be huge impact on the unemployment, because our population is not well educated and skilled to learn the AI. But in long term, we think it will definitely good for organization and our country for the economic development, and it will also create the later the opportunity for employmental, like there will be uh, uh, system required for the storing the huge data, and also there is a technician required for the repair of the this systems. So in future there will be definitely increase in the employment, but short term We we have are fearing, because we do not want to move out of our comfort zone. Like earlier when computer come, people were fearing that they will they have to do all the things on computer. They are not aware of that technology, and they were usually doing manually on filing all those things. That was the problem. Once they have skilled themselves to do those systems, they find it more easier and more efficient to work. And in long term, I think there will be definitely good impact on the employment, and it will increase the efficiency and productivity of any country and organization. Adding a different perspective to the discussion, AI is also was the one of the reason for many new startups which are mainly reliant on the customer engagement and customer relationships. Like if you consider an app like Duolingo, like with AI, a person, I mean, an employable person, if he is working in an area other than his hometown, could also learn few new languages and new skills as well through AI. So there are many new startups and also softwares which AI has been enabled us to learn new skills, as stated earlier by many of my friends. So AI is also going to create jobs for which new skills is required. Like some tools are required for which a lot of people are not ready. And I said one thing, that AI can some like deep hack like tool can morph the videos, and for and can be used for money extraction. So because a lot of people are losing job, so this can be also be a part of their to run their income. So it was a negative point in my opinion. Actually, that is one of the negative of AI. But if we consider the topic impact of AI and employment, then that won't be an issue here, I guess. And also,
I think the major problem of AI on employment would be the like cybercrime services, like especially hacking services. So basically, they can have a huge advantage of AI on their employment. I completely agree to what Vignesh just said. Like in addition to the cybercrime services, I believe data has also been a very big factor with the onset of AI. So, like AI has been in the boom for the past 3 4 years, and the roles of data analysts have also been tremendously increasing across the sectors across, and businesses have been hiring for data analysts for sure. So this data mining basically, coupled with AI, has been a sort of uh, revelation in this employment sector. So candidates who can basically upskill through this, and add this skill to their basket, have a huge uh, crack at employment basically with AI. Not only in cybercrime, AI has many advantages in industries. Like based on the previous data from the past 2 3 years, all the data cannot be analyzed manually. Using AI, we can analyze all the data and withdraw some insights from the data and take some critical decisions on the shop floor, so that some manual errors can be eliminated. Satya, did you participate? Satya, did you participate? Yes, sir. So now discussion As part. Vidya, Yeah. as Okay. Vidya told, the data can be taken, can be analyzed very easily. Like if you go over mechanical domain also, in inventory control, or in the data can be analyzed very easily, and the implementation of these AI in industries is somewhat difficult, and it is going to be very in a stable manner. And the skill gap between the AI and requirement of for AI and the people in the industries is quite the skill gap is there. It should be covered by using their new technologies and new skills that can be increased by learning all those things. Okay. Any other person who would like to add some points? Yes, sir. As AI has a positive impact, but it will have also the negative impact on employment. If you want to create for anybody who is artist who take so many months to create a perfect image, but by simply putting typing, yeah, it will give you same result in 2 seconds, and it is getting and AI is getting improving day by day. So it will be definitely bad for the artists, and so in this way they may find it more danger for their employment. I would also like to add a few points. Like AI is like a black hole. When we give some data, it gives us some insight, but we exactly don't know what's happening in it. What's the algorithm that's running inside that's running inside AI? So when something goes wrong, it's very hard to predict what is the root cause. So AI is something which we cannot completely rely upon, where human intelligence plays a role. So AI cannot eliminate, like we cannot completely depend on AI for all the jobs. I completely agree to the last 2 points made by my fellow members. Like the jobs of creative writers and basically the artists are at risk. Like we can see voice modulation in this AI on boom, and basically the jobs of creative artists are at a huge risk. So now we will conclude the discussion. So now, One thing I have to say. okay, Rohit. Recently, IIT Bombay has introduced AI as a subject in all the streams of its engineering branches. So with interest, people can switch to AI as a course in further as to do MTech or PhD. So there will be a positive employment
this is a positive point. So I think that if all the engineering colleges do the same, so it will be more benefit. Okay, so fine. So now conclude the discussion. So I'm starting it from Satya. Satya, please conclude the discussion. So, as we discussed from past few minutes, AI is tremendously affecting our human day-to-day life and industry sector also. So the technology should be used for many ways for employment, for job creation in data in sector and different sectors. At the same time, it will take some jobs because of a lack of some skills to it for the people. But it should be in a positive way. I can say. Thank you, sir. Okay, so now Vignesh. Uh, from hearing different opinions from my fellow teammates, I would like to conclude that the impact of AI on employment, they are both sides like a coin. So, talking about the positive sides, like data handling and many services companies which involve the customer engagement and health and pharmaceutical industries benefit a lot from AI because it makes the job easier for the employees. And also talking about the other side, it takes away many jobs because it takes a time for us to go through this transition. And also it would be difficult for the creative persons who, because of AI, where their voice or their images may reflect in some other websites or some other in a wrong way. So I think these are the both sides which AI has impact on employment. Okay, fine. So now Rohit, please conclude. Yes, sir. So as we guys told that copying the website. So yes, this is possible, and there will also be employment negative impact. This will negatively impact the human because of AI. Okay, so now Himanshu. Next. Yes. So basically, AI has definitely led to the loss of employment across sectors. Like as I said, voice modulation has been done. Creative writers have lost their jobs to creativity owing to some AI startups. But at the same time, this has forced a lot of us to upskill across sectors. Uh, like analysts have been forced to mine more into their data and derive a lot of results. So AI, the impact of AI on employment has been both positive and negative. And but looking at it from a brighter perspective, I would like to say that it has definitely made our lives easier, but at the same time, it has come at the cost of employment. So Toran. Yes, definitely. AI has a good impact on employment, good as well as impact on employment. But reaping the benefit of the good benefit of the employment AI, we have to educate our population how to use the AI. And the same way, it should be used in the regulated way, because there is a danger for one's privacy and. Another it can hinder the one's creative thinking, once we write essay and drawing image, so it can decrease the cognitive ability of human also. So it should be used in a proper way, so it can benefit us. Fine. So now Mahesh. Yes, sir. After listening to all my friends' points, I came to a conclusion that AI has both has impacts on employment. Like AI has customized our data in daily life and also provide advanced tools so that it makes our life easier, and also provides
cyber security to our country by analyzing more and more data. And on the other hand, it leads to some loss of jobs of unskilled laborers, but it can be improved by training them to new technologies and increase their skills so that it can be balanced in terms of jobs. Okay. So now, Subhyajyoti. Summing up the whole discussion, from summing up the whole discussion, the artificial intelligence has from starting from the advantages of making making people more employable in terms of learning the languages, training them on the current skill set according to the following trend in the job market, to the disadvantages of losing job in in the current scenario of AI. I think um, we should take it as a boon to the world, as well as uh, upskill ourselves so that we can keep it up with the current trend. So now, Sripriya, your turn. Please conclude. So concluding the discussion, AI, like, from all my friends, AI has definitely made life simple. It also has increased the productivity of a person. Like using AI, time can be effectively utilized. But on the other side, AI has definitely taken away so many employment opportunities. But it has also forced people to upskill. It forced people to learn all this artificial intelligence and ML. So, but using AI is never 100% accurate. There is always a scope for a mistake. But there comes human intelligence. So AI has not taken away many employment opportunities, but it has filtered the best of the people. So everyone concluded the discussion. So one person is missing. Who is that person? I. Yeah, Subhyajyoti. Okay. So now I am giving you the marks. ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट था इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में व्हाट यू हैव डन द ब्लंडर. आपने क्या किया कि आपने बॉडी पार्ट बोल दिया इंट्रोडक्शन में, जबकि इंट्रोडक्शन में हाउ यू शुड स्टार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने बॉडी पार्ट बोल दिया. दैट इज योर फर्स्ट मेजर मिस्टेक. एंड सबने ही यही बोला था कि इंट्रोडक्शन में ही बॉडी पार्ट बोल दिया था, जबकि इंट्रोडक्शन में बॉडी पार्ट नहीं बोलना. इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको अपने बारे में बताना है. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज मयंक एंड टुडेस टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट. So in today's scenario, as we all know that artificial intelligence has a positive points as well as the negative points. So ऐसे स्टार्ट करना है और इसमें एक दो पॉइंट्स ऐड करने हैं, नॉट ऑल द बॉडी पॉइंट्स, क्योंकि अगर आप सारे बॉडी पॉइंट्स इसी में बोल देंगे तो आपके पास जो भी डिस्कशन पार्ट होगा उसमें बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं. ओके, सो योर मेजर ब्लंडर इज दैट कि आपने इंट्रोडक्शन में ही बॉडी पार्ट बोल दिया है. लेकिन वहां पे मुझे एक चीज अच्छी लगी, हिमांशु और श्रीप्रिया, उन्होंने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले थे जो कि इंट्रोडक्शन में ही होने चाहिए. जैसे एक लॉजिस्टिक पॉइंट्स बोला था, हेल्थ केयर पॉइंट बोला था हिमांशु ने, और एक एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स बोला था इंट्रोडक्शन पार्ट में. सो दैट कैन बी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. जबकि श्रीप्रिया ने एक सुपर विजनरी पार्ट बोला था and another part बोला था developments. So that will be in the introduction part. Okay. Rest mistakes मुझे क्या लगी, देखिए रोहित एंड टोरेंट का कुछ मुझे नर्वसनेस लगी. वो कुछ नर्वसनेस थे क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब भी वो बोल रहे थे तो वो थोड़ा होपलेस फील कर रहे हैं. ठीक है, आपको अगर हिंदी में आ रहा है तो आपको हिंदी में ही जस्ट स्टार्ट कर देना है. इट्स नॉट लाइक कि आप इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैनल आपसे बोल देगा यू आर फील फ्री टू स्पीक एनी लैंग्वेज. अगर आप चाहे IOCL में जा रहे हैं, चाहे HPCL में जा रहे हैं, या फिर किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं. ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज नो पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड. अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में कंटिन्यू कीजिए, हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में कंटिन्यू कीजिए. ठीक है, तो तोरेंत और रोहित का मुझे यही नेगेटिव पॉइंट लगा कि उनमें थोड़ी क्या बोलते हैं नर्वसनेस दिख रही थी, जो कि आपको टाइम टू टाइम आ जाएगी. ठीक है, तो आपके मैं बता देता हूँ मार्क्स. इंट्रोडक्शन में देखो विघ्नेश के मार्क्स हैं 5 आउट ऑफ 10, सत्या के मार्क्स हैं 5 आउट ऑफ 10,
टोरेंट के मार्क्स हैं 4.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, रोहित के मार्क्स हैं 4.5 आउट ऑफ 10, हिमांशु के 6.5 आउट ऑफ 10, श्रीप्रिया के 6.5 आउट ऑफ 10, सुभ्या ज्योति आपके भी 6.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, महेश आपके 5 आउट ऑफ 10। आप भी थोड़ा थोड़ा होपलेस और नर्वस हो रहे थे जब भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट बोले थे। बॉडी पार्ट आपका बहुत अच्छा था और कंक्लूजन पार्ट भी आपका अच्छा था महेश। ठीक है, अब देखिए बॉडी पार्ट क्या था। जब भी आप डिस्कशन कर रहे थे तो रोहित कहीं और ही देख रहे थे। ठीक है, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, सबसे आई कांटेक्ट बना के रखना है। अगर आपके पास कोई पॉइंट है जस्ट एक नजर पॉइंट पे डालिए, देन आई कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने ही में लगे हुए हैं ऐसे देखना है, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ये था। आई कांटेक्ट किसने बनाए रखा पूरे डिस्कशन में? विघ्नेश, श्रीप्रिया एंड हिमांशु ने आई कांटेक्ट बनाए रखा, और सुभ्या ज्योति ने भी आई कांटेक्ट बनाए रखा, और सत्या ने भी। ठीक है, तुरंत आपने आप भी थोड़ा थोड़ा मतलब जब भी आपने बोला था तो आप शायद अपने पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में भी बताऊंगा कि क्या आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, जो कि मेजर पार्ट होता है कंक्लूजन, और उसके बेसिस पर ही आपको मोस्टली मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। द पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम दिस डिस्कशन इज कि एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन। कुछ कुछ डिस्कशन ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर आपसे पैनल ये बोल रहा है कि सत्या प्लीज पार्टिसिपेट, या विघ्नेश प्लीज पार्टिसिपेट, रोहित प्लीज पार्टिसिपेट, इट मीन्स कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स वहां पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो कंक्लूजन मुझे सबसे अच्छा लगा हिमांशु का और विघ्नेश का और श्रीप्रिया का। ठीक है, तो ये कंक्लूजन पार्ट मुझे अच्छा लगा। रोहित आपका कंक्लूजन बहुत शॉर्ट था, आपने केवल एक पॉइंट ऐड किया है। और कंक्लूजन पार्ट में आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ही कंक्लूजन बोल रहे हैं, मतलब दूसरों ने जो भी पॉइंट्स ऐड किए हैं वो आप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जो भी डिस्कशन किया है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जा रहा है। ठीक है, सो वट एवर यू हैव डिस्कस्ड इन द डिस्कशन थ्रू आउट द 10 मिनट्स, इट वेंट वेल, इट वेंट मतलब बेकार हो गया ये। ठीक है, तो ओवरऑल मैं जो बोलना चाहूंगा वो ये है कि देखो हिमांशु और श्रीप्रिया आपने अच्छा किया है। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था। जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। और विघ्नेश आपका भी अच्छा था। ठीक है, देखो रोहित आपको आई कांटेक्ट पे वर्क करना है। अगर अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बोलिए। ठीक है, लेकिन आपको बोलने हैं 3-4 पॉइंट्स बोलने हैं। कंक्लूजन जब मैं बोलूंगा, देखिए अभी क्यों अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जस्ट अगर पैनल ने कोई भी आपको टॉपिक दिया है तो वहां पे सब लोग स्नैच करेंगे। ठीक है, स्नैचिंग इन द सेंस के जस्ट जस्ट पैनल ने बोला द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट, दे जस्ट गिव यू द 2 minutes फॉर थिंक अबाउट द टॉपिक, एंड आफ्टर दैट व्हेन पैनल मेंबर सेड कि लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, सो वहां पर सब लोग ट्राई करेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट बोला जाए, क्योंकि उससे क्या होता है एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि आपने स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करने का एक मैनर होता है, वो मैं आपको प्रॉपर मैनर बता दूंगा कैसे होता है, जस्ट आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन। देखो महेश आपका कंक्लूजन पार्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, जस्ट आप में मुझे थोड़ा ये लगा कि आप भी थोड़ा नर्वस हो रहे थे। ठीक है, जब भी आप बोल रहे थे तो आप बीच बीच में अटक रहे थे, जस्ट लाइक रोहित एंड तोरन। रोहित एंड तोरन आपको थोड़ा प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है, और उस प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आपके घर में जो भी मिरर होगा, मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिरर में प्रैक्टिस इन द सेंस आप जस्ट कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया इन 2047, इंडिया इन 2050, इंडिया आफ्टर आफ्टर 10 years, 15 years। ठीक है, तो ये टॉपिक्स ले लीजिए, एंड आफ्टर दैट जस्ट गिव योर सेल्फ 2 minutes फॉर द थिंक अबाउट द टॉपिक, एंड देन प्रैक्टिस विद योर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है? तो चलो अभी क्या था टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, जस्ट अ मिनट। सो माय स्क्रीन इज विजिबल। यस। तो देखो ये आपका टॉपिक था, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्या पार्ट्स होते हैं। देखो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको कैसे बोलना है कि गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग सर और मैम, माय नेम इज दिस एंड टुडेज टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज द इम्पैक्ट ऑफ
artificial intelligence on employment. As we all know that in today's scenario, artificial intelligence is very important in terms of corporate world as well as in another scenario. ठीक है, तो इसमें आपको एक दो क्वेश्चंस एड अप कर देने हैं. Will it lead to the job reduction or will it increase the job reduction? So that क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छे वे में चला जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिवॉल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. While it promises increased efficiency and innovations, there are concerns about its impact on employment. ठीक है, will artificial intelligence lead to massive job losses or will it create new opportunities? तो ये जो क्वेश्चन है, अब क्या होगा कि आपका जब भी डिस्कशन पार्ट होगा तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं. इसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं कि दो पॉइंट हो गए आपके पास. फर्स्ट इज जॉब लूजेस एंड सेकंड वन इज क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज. दो पॉइंट बन गए यहाँ से. सो इट शुड बी लाइक दैट. ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन जस्ट आपको फोकस करना है कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं. दिस ग्रुप डिस्कशन विल एक्सप्लोर द मल्टीफेस्टेड इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द जॉब मार्केट कंसिडरिंग बोथ द पोटेंशियल बेनिफिट एंड चैलेंजेस. देखिए, जब भी कोई ऐसा टॉपिक आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका आपके पास सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट क्या होगा, इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट क्या इसको रिड्यूस करने के पर्पज से है या फिर गवर्नमेंट इसको मोटिवेट कर रही है. ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर. नाउ कमिंग टू द डिस्कशन. ठीक है, डिस्कशन में आपके पास दो पॉइंट तो यहीं से मिल गए कि जॉब डिस्प्लेसमेंट मींस जॉब लॉसेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी मींस जॉब क्रिएशन. ठीक है, तो इन दोनों पे आप डिस्कशन कर सकते हैं. ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना. ठीक है, ये मैं पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. नाउ कमिंग टू, जब आपके पास जॉब क्रिएशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हो सकता है, या तो जॉब अगर क्रिएट करनी है मींस आपको जॉब चाहिए, तो क्या हो सकता है, अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा उस जॉब के लिए. तो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग योरसेल्फ. ठीक है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं कि रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में क्या हो सकता है. कि जैसा कि एक पॉइंट बोला था रोहित ने कि आईआईटी बॉम्बे ने अपने करिकुलम में ये एआई इंट्रोड्यूस किया है. तो अगर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या फिर बिफोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अगर आपको थोड़ी भी एजुकेशन दी जाए रिगार्डिंग एआई, तो इट कैन बेनिफिट. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया आपके पास रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सोशल कंसिडरेशन. सोशल कंसिडरेशन में क्या इसके बेनिफिशियल हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं. तो दिस टाइप ऑफ थिंग दैट यू शुड थिंक ड्यूरिंग द डिस्कशन. तो 5 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे. कौन कौन से, जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब क्रिएशन, रीस्किलिंग, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एथिकल और सोशल कंसिडरेशन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट. अब जो भी सबने बोला, देखिए आपको अपने कान खुले रखने हैं जब भी डिस्कशन होगा और पॉइंट्स नोट करते जाना है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कंक्लूड करूंगा. ठीक है, मैं रियल जीडी की बात बता रहा हूँ, वहां पे जो जीडी होगा. ठीक है, वहां पे आपको सबको मौका नहीं मिलेगा कंक्लूड करने का. जब भी पैनल का मन करेगा कि पैनल बोल देंगे कि जस्ट कंक्लूड द टॉपिक. ठीक है, कंक्लूड द टॉपिक जब भी होगा. और अगर कोई पर्सन वहां पे ढंग से सुन रहा होगा जीडी को, तो वो पॉइंट नोट डाउन करेगा. तो ये सारे पॉइंट आपके पास नोट डाउन होने चाहिए. और इसमें मेंशन करना है कि एज रोहित मेंशन अबाउट द upskilling yourself, और as हिमांशु mention about the job displacement. अगर आप ये सब बोलेंगे, ये पॉइंट्स बोलेंगे कि एज हिमांशु मेंशन, एज श्रीप्रिया मेंशन, महेश मेंशन, तोरन मेंशन और सत्या मेंशन, इट मीन्स दैट यू लिसन ड्यूरिंग द डिस्कशन. ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होने चाहिए आपके पास कंक्लूजन में. ठीक है, तो कंक्लूजन आपके पास अपना हो सकता है, लेकिन कोई नए पॉइंट्स ऐड करने का मिनिमम ट्राई कीजिए आप. अब द पॉइंट इज कि सर मुझे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स कहाँ मिल सकते हैं. देखिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे. ग्रुप डिस्कशन के लिए जस्ट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट कि व्हाट इज गोइंग ऑन, वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अगर वो नॉलेज है इट मीन्स दैट यू कैन एज द ग्रुप डिस्कशन. और ग्रुप डिस्कशन में अगर आपने थोड़ा भी पार्टिसिपेट किया है तो आपको 50 to 60 मार्क्स इजिली मिलने वाले हैं. 50 to 60% मार्क्स. अगर आपने थोड़ा भी पार्टिसिपेट नहीं किया, पैनल को बोलना पड़ रहा है कि बोलिए, ये बोलिए, इट मीन्स दैट यू आर ऑन द एज ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है, तो द पॉजिटिव फीडबैक
in this discussion is everyone participated, nobody fight during the discussion. तो ये पॉजिटिव फीडबैक है. एंड रेस्ट टू वर्क योरसेल्फ. जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनमें आपको वर्क करना है. सो एनी अदर क्वेरी दैट यू वुड लाइक टू आस्क? आपका सर कोई मुझे कहाँ कहाँ पे सर Yes. मुझे कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है सर? हाँ, ये भी थोड़ा बताएं। जैसे आप बोलते हैं ना तो आप थोड़ा हाँफने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका शो करता है कि आप नर्वस हो रहे हैं. आपको क्या है कि अगर आप हिंदी में कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी में बोलना है. ऐसा नहीं है कि आपके ओके मार्क्स डिडक्ट होंगे. जैसा कि आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे रखे थे. देखिए, डेटा एफिशिएंसी पॉइंट रखा था आपने, प्रोडक्टिविटी पॉइंट रखा था, और अगेंस्ट योरसेल्फ, ये पॉइंट सोसाइटी के अगेंस्ट भी हो सकता है. ये भी पॉइंट रखा था. सोशल इम्पैक्ट जो मैं बता रहा था आपने, डेटा एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और सोशल इम्पैक्ट, ये पॉइंट्स रखे थे जो कि काफी वैलिड पॉइंट्स थे. ठीक है, बस आप अगर इनको फ्लुएंटली बोलेंगे, फ्लुएंटली इन द सेंस थोड़ा पॉज लेके तब बोलेंगे. और अगर आप होपलेस नहीं होंगे, बस आपको बोलना है कि सर डेटा एफिशिएंसी, ये डेटा एफिशिएंसी में भी वर्क करता है, प्रोडक्टिविटी में भी वर्क करता है, और ये बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि सोसाइटी के भी अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि इससे आपका डेटा लीक होने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है, तो आप अगर ऐसे धीरे धीरे बोलेंगे, आराम से, क्योंकि आप जब अगर आपने एक बार ग्रुप डिस्कशन खींच लिया तो जब तक आप पॉज नहीं होंगे तब तक दूसरा नहीं बोलेगा. ठीक है ना? ओके ओके. एनी अदर पर्सन? Sir, सर वो same here. जीटी का भी Areas of सर improvement. यस. यस रोहित. जीटी के लिए पूछ रहा था सर, जीटी में क्या होता है? देखो, जीटी में आपको क्या होता है, जीटी में आपके पूरे ग्रुप के पॉइंट्स होते हैं. या तो आपके पूरे ग्रुप के पॉइंट्स मिलेंगे या फिर पूरे ग्रुप के पॉइंट्स डिडक्ट होंगे. उसमें आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. उसमें सेम आपके पास जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास कोई वन पर्सन इंट्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. आफ्टर दैट आप डिस्कशन करेंगे और उनको कंक्लूजन बताएंगे, कोई भी एक पर्सन. और जीटी में आपके पास एक कंक्लूजन डेफिनेटली होना चाहिए. जीडी में आपके पास हो सकता है कंक्लूजन हो या ना हो. ठीक है, आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग कर रहे थे कि आप न्यू पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. बट जीटी में बिलीव मी, अगर आपके पास कंक्लूजन नहीं है तो इट मीन्स कि आपका जीटी बहुत बेकार होने वाला है. तो इसलिए वहां पर जीटी में ग्रुप टास्क है, वो एक टास्क देंगे और जस्ट आपको कंक्लूड करना है उसको. ठीक है, एनी अदर? Sir, what are the areas of improvement for me? व्हाट? What are the areas of improvement for me? विघ्नेश, आपका क्या है कि आप जो पॉइंट्स बोल रहे थे वो आपने काफी कम पॉइंट्स बोले हैं. ठीक है, आपको पॉइंट्स थोड़े ऐड करने हैं क्योंकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है. ठीक है, आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं. ठीक है, तो ट्राई करो कि आप 4 to 5 पॉइंट्स ऐड करो बॉडीज में, जो भी बॉडी पार्ट है. ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब भी जीडी लूंगा तो आपको इंट्रोडक्शन में बॉडी पार्ट इंक्लूड नहीं करना. Okay, sir, got it. एनी अदर क्वेश्चन? सर सर बॉडी पार्ट्स में प्रोज एंड कॉन्स दोनों बोल सकते हैं क्या? हाँ, उसमें आप जो मन चाहे वो बोल सकते हैं. ठीक है, बॉडी पार्ट में, क्योंकि आपको अगर कोई भी टॉपिक है तो आपको दोनों साइड उसकी बोलनी है. ऐसा नहीं है कि आप एक एक्सट्रीम साइड बोल रहे हैं. ठीक है, कि जैसे सपोज कोई एक टॉपिक है, आर पॉलिटिशियंस बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी और नॉट, तो ये काफी मतलब हॉट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं कि पॉलिटिशियन हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है और नहीं भी. तो आपको दोनों पॉइंट्स बोलने हैं. मीन्स एक ही पॉइंट्स नहीं बोलना है कि हाँ पॉलिटिशियन हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि आप किसी एक्सट्रीम केस को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है ना? तो अगर कोई भी ऐसा केसेस आते हैं जिसके दो पार्ट्स हैं, तो आपको दोनों पार्ट्स उसके बोलने हैं, दोनों में एक एक दो दो पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं. ठीक है? हाँ सर अगर इंट्रोडक्शन में ही किसी ने अगर बॉडी पार्ट बोल दिया पहले ही, हाँ, जैसे पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, तो हमारे पास मान लो तो बोलने के लिए तो बचा ही नहीं होगा कुछ लास्ट में. तो आपको तो बोलने के लिए नहीं बचा ना, तो उस सीन में तभी तो इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको अपना नाम बोलना है, टॉपिक का नाम बोलना है, और टॉपिक करंट सिनेरियो के रिलेटेड कैसा है, ठीक है, वो बोलना है. और इसके अलावा उसके पास एक या दो पॉइंट्स ऐड कर देने हैं क्वेश्चनिंग पार्ट में. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉब क्रिएशन विल इट क्रिएट
jobs or will it lead to the job loses? ठीक है, तो ऐसे करके एक क्वेश्चन ऐड करने का ट्राई कीजिए और वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। बिलीव मी, आप 2-3 जीडी और देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। सर मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी थी? हिमांशु, आपका थोड़ा बॉडी पार्ट्स मेरे को वीक लगा, बाकी आपके ये जो इंट्रोडक्शन थे, एक तो आपने इंट्रोडक्शन में ही 2-3 पॉइंट्स बोल दिए थे, हाँ तो मुझे जो बॉडी पार्ट्स में लगे, जो कि इंट्रोडक्शन में ना होके बॉडी पार्ट्स में होने चाहिए थे, जैसे आपने लॉजिस्टिक बोला, हेल्थ केयर बोला, एम्प्लॉयमेंट बोला, ऑल पॉइंट्स आर वैलिड एंड वेरी गुड पॉइंट्स। ठीक है, तो वो आपके इसमें होने चाहिए थे बॉडी पार्ट्स में, जो भी डिस्कशन पार्ट्स है। ठीक है, बाकी आपका कंक्लूजन पार्ट अच्छा था। ओके, थैंक यू। या अदर पर्सन? Sir, on what areas do I improve? Okay, Satya, so you should improve. First of all, your eye contact is not proper to the persons. Okay, so Okay, you sir. should do proper eye contact to the other persons, and whenever you are talking, then you just talking. Okay, okay. So just you just have to think what you are speaking. जैसे first of all, your points is it decreases the employment and healthcare related points. So if anyone is speaking about the healthcare, okay, it means that you should not include the healthcare point. ठीक है, सो अगर कोई पर्सन ने आपका पॉइंट बोल दिया है तो जस्ट आपको हेल्थ केयर नहीं बोलना है, उसके दूसरा एलेबोरेट करके पॉइंट बोलना है। ठीक है, तो जस्ट आपको एक आई कांटेक्ट इंप्रूव करना है एंड थोड़ा फ्लुएंसी लानी है अपनी स्पीकिंग स्किल्स में। ठीक है, बाकी Okay, sir. रेस्ट इज ओके। या Thank you, sir. Sir, what are my areas of improvement? श्रीप्रिया, योर एरियाज इम्प्रूवमेंट इज, देखो आपका, जस्ट अ मिनट, आपकी देखो फ्लुएंसी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था और आपने पॉइंट्स भी अच्छे बोले हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट यही है कि जस्ट आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पॉइंट्स हैं जैसे 4 to 5 पॉइंट्स हैं तो जस्ट आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, आपको थोड़े और पॉइंट्स ऐड करने हैं अपने डिस्कशन में। न्यू पॉइंट्स अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बी बेनिफिट फॉर योर सेल्फ। सो या शुड बी एंड ऑफ द मीटिंग? ठीक है, सो ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रुप टास्क रखते हैं फिर। ठीक है, ओके अभी ग्रुप डिस्कशन हुआ है, सो नेक्स्ट ग्रुप टास्क मैं उसका एक बॉडी पार्ट बता दूंगा और इसका मैं पीडीएफ शेयर करवा दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, ओके सर ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। ओके, ओके बाय बाय। थैंक यू Thank you, sir.